हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा। सो सॉरी फॉर द डिले। ये थोड़ा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो हो गए थे, तो हमें दूसरी क्लास में शिफ्ट करना पड़ा है। सो वेलकम टू दिस न्यू कोर्स in your second term. The course code is C873 and the title is River Engineering. So it will have 3 credit hours. That is 3 hours class per week and no practical component. So first we'll go through the course introduction and then we'll start the first lecture. So first coming to the course outline, we will start with the introductory matters, which will include the introduction, what are the various river characteristics, how various rivers can be used for human purposes. Then we will come to the second topic of river hydraulics, in which we are going to have, you can say, refresher course, because you might have studied in your first course, that is advanced open channel hydraulics, the flow classification, what are the various fundamental questions, then overview of techniques for hydraulic studies, and what are the data which is required for the hydraulic studies. Then after river hydraulics, we will study the river morphology, or also known as the river mechanics, in which we are going to discuss what is the various classification of rivers, how the various rivers behave when they are flowing in a relatively straight path or they are following zigzag path, then the river regime theories, then the process of meandering, cutoffs, and lastly the effect of dams on river regime. The fourth topic will be regarding the river survey. Whenever we want to carry out any study regarding some construction of hydraulic structure or pertaining to some water sources planning or development project, we have to carry out a river survey. So in that main topic, we are going to study the subtopics like introduction, then various maps, the data which is to be collected regarding water levels, what are the instruments used for measuring the water levels, then instruments used for bed levels, then how discharge they are estimated, then the relationship between stage and discharge, which you might have studied also in your course of applied hydrology, then regarding the sediments, and lastly the water quality. Then our next topic will be regarding the river training works, because the rivers have to be trained so that we get protection from the floods, and also we have to protect our river banks against erosion. So there are various river training works. Those are mainly the engineering works which are carried out in order to control the flood or in order to control the bank erosion and so on. So we are going to discuss in this topic the design needed for the river training works. Also we will go through that. And lastly, the river engineering, the introduction, what are the various bed regulations, how we control the discharge to control water level, water quality control, and river engineering, which is needed for various purposes. So this is the course outline which we are going to study in this course, which is your compulsory course. Then the books, because at master's level there is no textbooks, so there are reference books. So we are going to follow the principles of river engineering. It is a very old book, 1979 it was written there, but it is very useful and known as a classic book regarding the principles of
river engineering. So it is available in our NIT library, and some chapters also have got the soft copy, which I will be uploading there at LMS. Then various books like river engineering, you can go through it. Then for mechanics, river mechanics, a very good book by Pierre Julien. And also there is a good book regarding the river training techniques, the fundamentals, techniques and applications. So these are some reference books. There are more reference books which you can go through these books if you want to have knowledge regarding any topic, more details. So you can have go through these books which are available in our library, especially the book by Graf. If you are interested in the sediment transport, so this is a very good book for this topic, and for various topics these books are recommended. Beside that, I will be giving you the presentations and materials in short form as well. Grading, as usual, this is not official, but when the official grading will be announced, then I will be sharing with you. But like previous, before the COVID-19 situation, this was the grading, you can say weightages. For end semester exam, 50%, 2 1-hour test constituting 30% weightage. There will be 4 quizzes from time to time having weightage of 10% and 4 assignments also carrying weightage of 10%. But this can change, and the latest information will be shared as per the pandemic situation. So this is not final, but likely if things go normal, then this is the grading policy by NUST. Then you already know my contact information. You have my office number and mobile number and my email as well. So this was brief introduction regarding this course. So now we'll be starting with the first lecture. तो अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको कि दोबारा मुझे शेयर करनी है? आ रही So starting with the introductory matters, basically the introduction to this course and some very basic things which is needed as background, as this may be a new subject for you, but it is mainly based on the hydrology which you have studied in your first term and the hydraulics which you have studied in the advanced open channel hydraulics course. So this is a combination of hydrology and hydraulics. So first coming to introduction. So if we see the natural state of river, if it is flowing in natural state, then we see that its use can be seldom as per the expectations of the human beings, because when we need water, there may not be water in the rivers, and when we don't need it, there may be surplus water which is flowing in the rivers. So it is seldom in harmony. So that's why we have to carry out some engineering works in order to tame that river as per our demands, to meet our demands, to meet our expectations for various sectors, demands like demands from the industrial, agriculture and the domestic sector. So the works which we carry out, of course, these will be engineering works. So they will have an impact on the river flows. The river which were flowing naturally, they will be affected. And how they will be affected? They will be affected in 3 ways. First of all, whatever the engineering works which we carry out, we make changes in the river bed.
which also includes the banks of the rivers. So that means the riverbed change, the riverbed conditions, they will change. Then there will be changes in the discharge. So that can increase or decrease as per the engineering works which have been carried out. And in return, the water levels will also have change. So basically, there will be three changes in the riverbed, in the discharge of the river, and in the water levels due to the engineering works which we carry out in these rivers in order to cater for our demands. Because naturally, it is not much of use to us. So in order to have its maximum use round the year, we have to make some changes in the river by carrying out some engineering works, and this affects these three things: the riverbed, which include the banks as well, the discharge, and the water levels. So why we make the changes in the riverbed? So mainly they are carried out in order to help to solve the problem of erosion or sedimentation problems. Where there is erosion, the bed level it goes down, or there is increase in bed level due to sedimentation. Then we have to make changes in the bed level. So when we make these problems, these solutions to these problems of erosion or sedimentation, it may be limited to few kilometers, or it may be up to 100 or more than 100 kilometers. So the process of erosion or the siltation, that is the sedimentation which is taking place, so this may take hours in order to achieve the equilibrium, or it may take centuries to reach an equilibrium. That is the natural river states. In equilibrium state, it may take very few hours, or it may take a very long time. So sometimes the bridge piers which we have constructed for the bridge, they are affected due to erosion. There is local scouring around the bridge piers foundation, it is affected, and the bridge structurally gets weakened and it may collapse. So we have to then take measures in order to stop the local scouring around the bridge piers. Then if we are using that river for navigation purposes, we are using for means of transportation, then a certain depth has to be maintained. And for that, we have to dredge the bed channel so that certain depth is available round the year so that the navigation is possible. So likewise, there can be other problems of erosion or either sedimentation, for which we have to carry out the measures in order to control this phenomenon. So all these problems, they are mainly concerned with the morphology of the riverbed. So the river works which we carry out in order to solve these problems, they can be mainly divided into two types. Either they can be temporary or repeated works that we have to carry them more than once, or they can be of permanent nature that we call them as permanent works. So the river works can be temporary or repeated, or they can be permanent works. So an example for the temporary, repeated or permanent works can be if we want the particular depth of a river to be available for navigation purposes, what we can do, we can start dredging that particular stretch. But what will happen? After some times, there will again be siltation, and that dredging phenomena impact will be minimized. So that means this is a temporary measure, because for the time being the problem is solved, but after say 1 month, 6 months, or even 1 year, again that area will be silted up, and again we have to carry out the dredging. So such types of works, they are temporary or repeated works. But on the other hand, if we want that this should be having a permanent solution, then we can construct groins.
Groins are structures which are lateral to the river banks. So we can constrict the river reach so that the velocity is increased. When velocity is increased, there will be erosion of the bed and the depth can be maintained. So this is a permanent solution. If we construct groins on the both the banks 90° to the banks, it will restrict or constrict the reach width, and in turn, when area is reduced, velocity will be increased. As you know, discharge is velocity into area. So you are decreasing the area, it means velocity will be increased. It will The increase in velocity will result in erosion of the bed. Sufficient depth will be available for navigation purposes. So that means this type of work is of permanent nature. You don't have to dredge now again and again. Though it may cost more, the construction of groins, but this is a more permanent solution for such type of problems. Instead that we carry out dredging again and again, and at the end this may cost more because maybe every year you have to dredge that out. But once you construct such types of groins, they will be of permanent nature. But when you take such measures, remedial measures, then you have to also see that they will be having some effect both on the upstream and downstream side. And these have to be studied, that when you have made the changes in the natural river, for how long depth or for length their river is affected. So this has to be studied. So because these changes will occur on both the upstream and the downstream side. So likewise, we have to make changes for changing the discharge or the water level. So because the rainfall is a random phenomenon, sometimes there is more rainfall and sometimes there is less rainfall, and likewise the runoff generated will also fluctuate, which will be appearing in our rivers. So that means we have to make some changes so that we have enough discharge to meet our demands. So we may construct reservoirs, dams, in order to store the water when we have surplus. So when we construct a dam, we construct an obstruction across the river. So what will happen? It will also have impacts both downstream and upstream side. So the rainfall pattern, we have to match it with our needs, because that is you can say entirely different pattern. In monsoon we get a lot of rain, more than our demand, and in winter, in low flow seasons, we get very less water. So that's why we have to construct reservoirs to store the surplus water, and likewise when we have surplus water, there can be the hazard of flooding. So these reservoirs also take care of that, because the excess water will be stored in these reservoirs, and the downstream we can save the human property and human life. But of course, by construction of such measures, they are going to have effect on both upstream and downstream side. So they should be quantified, that how much changes in discharge or in the water levels take place upstream or downstream, or there are other changes which are taking place due to the construction of reservoirs or dams across the river. So beside these engineering works, the one more problem which a river engineer has to face is that of the water quality. As you know, wastewater from the industries, from the agriculture, from the domestic side, without treatment, it is being disposed of in these rivers, and it is polluting the surface water as well. So the river engineer has also to take care of the water quality. So when the wastewater is added to the river flow, you cannot do anything about that.
you have to go to the source. What is the source of pollution? So when you identify the source, there you can have some treatment. If it is coming from some industries, then the treatment plant should be advised to the industries to construct these wastewater treatment plants, treat the wastewater, and then discharge it into the rivers. So the water quality has also to be taken care of because both physically, biologically, and chemically, the water should be fit for the consumption of human needs. So now coming to the use of rivers, rivers can be used in many ways by the human beings for their meeting their demands. So in this table, you see in the first column is the use of rivers. So many use of rivers are listed here. Some are not directly the use of river, like the first flood control. So it is not the directly use of river, but indirectly we are saying that in order to control flood, we have to take some engineering works. And when we carry out engineering works, they affect the discharge and the water levels. So that's why we have considered in this table, because we are going to see that what are the various uses and what measures we have to achieve in order to have full efficiency use of these uses which we have listed here. So in the first column, use of river is given, and the first row you see are the measures. Measures for the bed regulation, because initially I told you there will be three changes. Changes in the bed levels, in the discharges, and in the water levels. So the measures which are carried out for bed regulation, like repeated dredging, temporary construction in riverbed, fixation of bottom, and so on. So these measures are carried out for regulating the bed levels. And the measures which are carried out for the discharge and water level regulation, they are the construction of reservoirs or weirs, and for quality control, there will be quality control works like wastewater treatment plants before wastewater is being discharged into the fresh bodies. So we will go one by one. So there are measures which are given here. Number one indicates measure to achieve the required use. Number two indicates measure of secondary importance for the use. That is, it is having second importance in order to have that use. And third, measure which might be necessary as a result of the operation. So flood control. So this is the first indirect use of river. We construct reservoirs or weirs in order to control the floods. So what we'll be needing is the reservoirs and the weirs, because the two parameters which are going to be affected will be the water levels and the discharges. Then navigation. So navigation, of course, it is dependent on the water depth available. So that means we have to make some measures regarding the availability of sufficient depth for navigation purposes. So you see, repeated dredging can be one of the measure for bed regulation. It can be temporary construction in riverbed. So these are the primary measures to achieve the required use, and some are secondary or the measures which might be necessary as a result of the operation. Then the third use can be generation of hydropower. So for hydropower generation, what we need head. So head is provided when we construct the reservoir or dams. So discharge is there, head is there. So hydropower generation is possible. Likewise, if there is a weir, also weir will create head and we can generate hydropower. The fourth use can be irrigation and water supply for agriculture purpose.
we need water, river water for irrigation, and for domestic purposes, for water supply to the towns or cities. Also, we use water, river water for that. So for that, we have to fix the bottom or some other measures which we have to carry out. Again, we have to construct reservoirs so that we get the water, irrigation water, and the water supply round the year. So if there is storage, then only it will be possible in order to have the river water round the year. Then waste discharge. Rivers mostly are also used as for drainage purposes. All the wastewater, so that should be first treated and then disposed of in the rivers. So one of the use of rivers is the waste discharge. So and mostly the you can say the pollution is diluted if you add in the fresh water. So though it is not a good measure to dilute the pollution by disposing of into fresh water, but this has also been carried out. Then bank protection, we have to protect the banks against erosion. So many times you have heard in the news that due to erosion, very you can say precious lands or some properties that is being added in the river itself due to the bank erosions. So the banks have to be protected. So we have to carry out some measures. Then another use is of cooling water. So for industrial purpose, water is used for cooling purposes. Water is not directly consumed, but used for cooling purposes and also for nuclear plants like Chashma nuclear plant. So it is built across the river Indus. Water is used for the cooling purposes, and when it is disposed of, the temperature 2 degree, there is rise in 2 degree centigrade, and this has adverse impact on the biota, that is the organisms which are living in the rivers. For rise in 2 degree, so will have adverse impact on the you can say the dissolved oxygen as well. The oxygen will be less dissolved, and this will affect the living creatures in the river itself. Then another very strange feature of use is the commercial sand dredging. So ये आपने बड़ा देखा होगा कि रावी की बड़ी फाइन सैंड रिवर रावी की या और रिवर्स की. So that is dredged and is sold for commercial purposes as it is available free of charge. So this also has very got negative impact as you dredge the sand and you create depressions which attracts the water towards the banks and erosions they start. Then rivers use another is the rivers crossings like pipelines, sweep gas pipelines or water supply pipelines. आपने देखा होगा bridges के along parallel they are also passing. So for river crossing they are also used. And lastly, for control of seawater intrusion, like in our Sindh province, where Indus is disposed of into Arabian Sea, if there is less water in Indus water, saline water from Arabian Sea enters into the Indus water, creating salinity in the area of the Indus River, and the ecosystem is you can say affected. So there should be minimum environmental flows, which have been calculated as 10 MAF, 10 million acre feet. So, but in dry periods, even not a single drop passes down the Kotri Barrage, and this seawater intrusion problem is very grave in such conditions. So now it is proposed to construct another barrage downstream Kotri, which is known as the Sindh Barrage.
So feasibility has been carried out by NESPAC, and it might be construction might take place this year. So this will have the beneficial effect because due to another weir downstream, so there will be storage of water. So the sea water intrusion that can be controlled as the environmental flows requirements, it can be met, and also the land which has been degraded due to salinity, that may be reclaimed. So this Sindh government has also consented for this project as it is in benefit of Sindh province as well. So this is sooner going to take place. So these are the various uses, and you see the various measures which are carried out. Now coming to river characteristics. So river characteristics, mainly they are related to channel itself. That is, what is the length of the river, what is the width of the river. So that is very important. Then whether it is flowing in steep areas or in relatively flat terrain and so on. So the channel characteristics are the main river characteristics. Then the second characteristics which are related to a river are the catchment areas, the drainage area, which is contributing the surface runoff, which is the source of water for that particular river. So more the catchment area will be, so more surface runoff will be added to that river itself. Then the shape of the catchment, whether it is a fan type shape or it is fern shape, so that will affect the arrival of runoff. So the shape has also got, you can say, impact on the arrival of runoff. Then the drainage pattern within the catchment area, how dense the drainage pattern is. So if there is a dense drainage area, a drainage network, so the runoff will be arrived very soon. So there, the runoff will take less time to reach at the catchment outlet. Then another thing which is important for the river is the rainfall runoff relationship. That depending on the catchment characteristics, the yield of runoff, if it is devoid of any vegetation, so what will happen? More runoff will take place. If there is impervious surfaces, there is human interventions in the catchment area, less vegetation, deforestation, so more erosion and more runoff and resulting in flood downstream. So this will depend the amount of rainfall and the characteristics of the catchment which will result in the generation of rainfall, runoff. And lastly, one of the most important characteristics of the river is the sediment load, how much it is carrying, the sediment yield. So you might have heard the name of Yellow River in China. So its name is given because it carries a very heavy load of sediments, and that's why it is named as Yellow River. So especially the rivers which have the catchment area where there is deforestation, less vegetation, they will also be having a huge amount of sediment load which will be flowing in those rivers. So if we look at the 10 world longest rivers, तो सबसे length में कौन से बड़े rivers हैं? So the longest you see is the Nile, is 6,650 kilometers. Nile, there is a very famous dam constructed across Nile in Egypt, that is Aswan Dam, and very old dam. So this is in Northeast Africa, shared by many countries of the African countries. इसमें Egypt है, Sudan है, Chad, and so on. The countries share this water of Nile.
and there are two Niles, Blue Nile and White Nile. अगर कलर्स देखें तो वो दो अलग अलग कलर्स में इसके नजर आते हैं. Then the second longest is the Amazon, जो साउथ अमेरिका में है. ये थोड़ा सा इससे कम है, 6,400 किलोमीटर्स. साउथ अमेरिका में वेरी फेमस अमेज़न रिवर. आपने इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, बड़ी नेशनल जियोग्राफिक चैनल के पर आती हैं. देन चाइना में थर्ड यंगसे 6,300. देन यूएसए में मिसिसिपी मिजोरी, द फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर. फिर रशिया और मंगोलिया में जो है जेंसाई अंगारा सरीनगा, दिस इज नोन. देन येलो रिवर ऑफ चाइना 5,464. फिर रिवर which is shared by Russia, Kazakhstan, China and Mongolia of Irtysh. Then Congo River in Central Africa and Amur in Russia, China, Mongolia से. और लास्टली एक और था कोई, छोटा कर शायद नजर आया. Lena, that is in Russia, that is 4,400 kilometers. So these are the top 10 world's longest rivers. But if we see in terms of discharge, then things change, because rivers can be viewed with different aspects. आप लेंथ देख सकते हैं, आप डिस्चार्ज देख सकते हैं, आप सेडिमेंट लोड देख सकते हैं, उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. So if we look discharge wise, then Amazon is the biggest river in volume. और इसका अगर आप देखें डिस्चार्ज, so it is 2,009,000 क्यूमिक्स. हाँ, क्यूमिक्स इसका डिस्चार्ज है, and it outflows in the Atlantic Ocean. So उधर अमेज़न आपने देखा था कि सेकंड लॉन्गेस्ट था और नाइल वाज द लॉन्गेस्ट, बट डिस्चार्ज वाइज दिस हैज गॉट नो मैच. अगर आप डिस्चार्ज वाइज देखें, सो दिस इज नंबर 1. लाइक वाइज कॉन्गो, जिसका काफ़ी नीचे नाम था, लेकिन डिस्चार्ज वाइज देखें 41,200 क्यूमिक्स एंड सो ऑन. सो यू सी द टॉप 20 डिस्चार्ज वाइज अगर आप देखें, सो स्मॉलेस्ट वन जो 20th नंबर पर है, उसका भी डिस्चार्ज 13,540, which is actually outflows into the Amazon River. So this is also from the South America. So rivers are classified in various ways, length wise, discharge wise, and then we come to the sediment wise. अब सेडिमेंट वाइज देखें तो गेंजिस, ब्रह्मपुत्र, इट लिस्ट द टॉप्स. 1,670 million tons per year, and also you see the Indus, 100 million ton per year. It is carrying so much load. So यहाँ आके हम तकरीबन 11वें नंबर पर हैं सेडिमेंट वाइज. तो एशियन आपको फिर ये येलो रिवर आपको नजर आएगा, ये जो यंग से 478, मीकोंग शेयर्ड बाय 8-9 कंट्रीज 160, और ये जो लास्टली जो यूकॉन 60 million tons per year. So these are the top most heavily sediment carriers जो कि आपको वर्ल्ड में नजर आते हैं, और मोस्टली एशियन रिवर्स टॉप कर रहे हैं इसके अंदर. क्या चीज डेटा? हाँ, इसमें क्योंकि दो तरह के सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं इसके अंदर, एक तो बेड लोड आ रहा होता है और एक है सस्पेंडेड. तो टोटल जो है फिर ये जो बेड लोड है वो तो रास्ते में सेटल हो जाता है, और अगर आपके रिजर्वायर्स वगैरह तो वो ट्रैप कर लेते हैं. तो बाकी जो भी बचता है वो फिर जब ये डिस्पोज ऑफ होता है किसी सी के अंदर, उससे पहले डेल्टा बना देता है.
So all that is deposited there. और वो मेनली फिर वो मीडियम और फाइन ही रह जाता है ना, बहुत हैवी तो पीछे ही रह जाता है। हाँ, वो तो वहीं ट्रैप हो जाता है। लेकिन ये टोटल लोड है जो कि, और ये भी एवरेज सेडिमेंट है, नॉट एवरी ईयर इट इज कैरिंग, बट इट इज ए लॉन्ग टर्म एवरेज which it carries. So we have seen that rivers, they are enormously diverse. So they have got various features. So they vary in size. So you have seen very small rivers having very small discharge, and some having a very high discharge like Amazon River. Then they vary in geometry. The cross sections, it also varies. Then the material in which they flow, whether it is bedrock or sediment, that is known as substrate. That also varies. जो नॉर्दर्न एरियाज में आप देखें कि वो बेड रॉक्स में फ्लो कर रहे हैं, बट इन प्लेन एरियाज व्हेन दे एंटर इन पंजाब, दे आर ऑल बिकम्स एलुवियल रिवर्स, क्योंकि वो सेडिमेंट में फ्लो कर रहे हैं, जो वो डिपॉजिट हो रहा है उसी के अंदर फ्लो कर रहे हैं. देन रिवर्स ऑल्सो वेरी इन द सेडिमेंट टाइप. Sediment type varies a lot from mud to gravel or even boulders or cobbles. ये बहुत वेरी करता है, कोर्सर मटेरियल, मीडियम और फाइनर, किस टाइप का उस पर सेडिमेंट आ रहा है. देन इट ऑल्सो वेरीज इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. सम आर यंग रिवर्स, दे हैव जस्ट एमिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स, जो कि जियोलॉजिकली दे आर यंग, so they keep on eroding their bases and their banks, and to very old which becomes gentle, like rivers flowing for hundreds of years, they have become gentle and their topography relatively becomes flat. जो हमारे पुराने rivers हैं, mature rivers हैं, so they vary in the stage of development as well. So some are very active and some are very gentle, or they become very mild. Then climate, due to climate variability, the rivers also have different characteristics. Some are amphiral and fleshy to very steady. Amphiral, they flow for very short time and have flash floods. And some round the year they are flowing. अगर आप हमारे ये main rivers देखें, they flow all round the year because base flow, the groundwater, that keeps on flowing. But some you can see rivers, they flow for only that period when there is rainfall in the catchment area, causes flash floods, and then nothing happens in those rivers. So rivers, they can vary in size, geometry, the substrate, sediment type, stage of development, and due to climate. So no two rivers we can say they are exactly alike. We can never say that in globally that these two rivers, they are identical or they are same. But there are some things which we can say that all rivers have some things common in them. And what are those? The common things are that how we can analyze the hydrology of rivers. So this is the common feature, the hydrology of rivers. Though rivers may differ, but this thing will be common. Each river will have its own hydrology, which will be different from this other. Then the dynamics of turbulent open channel flow. That during the like monsoon season, when there is floods, how they behave in such conditions when there is a lot of turbulence. So entirely their behavior changes. And then the dynamics of fluvial sediment transport, how they are carrying out the sediment movement. So though these rivers are different, but these three things we can talk about for each of the rivers. These are common things. Hydrology, their behavior in the turbulence conditions, and the sediment transport behavior.
So the study of rivers, it has got many classifications. ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया कि इसको फर्दर डिवाइड कर दिया. रिवर इंजीनियरिंग तो हम जनरली इसको कह रहे हैं, बट इफ यू लुक एट द वेरियस फील्ड्स, so ये जो study of rivers, they themselves have become the entirely different disciplines. The first is the fluvial hydrology, where the main focus is on the study of water, the water itself, only the characteristics of water. When you are just studying the characteristics of water flowing in the river, it is known as fluvial hydrology. But when you study the flow of rivers, that how water is flowing, the behavior of that water, it becomes fluvial hydraulics. That becomes another discipline. Then if you are studying the sediment movement in rivers, how the sediments are moving, how they are being flowing in the rivers, then it becomes fluvial sedimentation. That is another specialization and another branch. Then fluvial sedimentology. So though this resembles with the fluvial sedimentation, but this fluvial sedimentology is mainly concerned with the processes and the fluvial sedimentary deposits, that how the sediments are deposited. The first one is the movement, but when because the sediments are not only moving, they are also being deposited. So then it becomes two different things. So some features will be common, but if you focus on the movement only, then it is the fluvial sedimentation. But if you focus on the deposits, how the sediments are being deposited within the river, then it becomes fluvial sedimentology. And lastly, the fluvial geomorphology. That is the study of fluvial geomorphic processes, the sediment movement, the channel changes, broader river valley processes, drainage network development. So how the evolution of rivers take place, the formation of river valleys and drainage systems. So when you focus on the processes, then this becomes fluvial geomorphology. So very wide field. तो आप देखें हर एक्सपेक्ट को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिवर्स हर एक अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर उसका. एंड इट इज सेड दैट दो रिवर्स लुक लाइक साइलेंट बट they are speaking. When you make changes, they convey you their protest as well. कि जब आप उनमें कोई चेंजेस लाते हैं तो वो खामोश नहीं रहते हैं. When you try to listen, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो कि रिवर्स को स्टडी कर रहे हैं इस हवाले से कि हाउ द रिवर स्पीक, उनके क्या साइंस हैं, हाउ दे आर प्रोटेस्टिंग व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस अक्रॉस दोज रिवर्स. उनका नेचुरल फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, सो दे शो द यू कैन से रिएक्शन टू दैट चेंजेस. क्योंकि नेचुरल चीज़ है, जब एक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन भी आएगा. So if you look at basic characteristics of rivers, so we have seen that they have a wide range in size and that can be measured regarding water discharge. They vary in discharges, in the sediment discharge or lengthwise. So this is one of the basic characteristics of rivers. So they have a wide range of water discharge and even wider range of sediment discharge as a function of time. So with respect to time also, the discharge and sediment varies. In the normal flows, discharge is low, sediment is also low. But during, you can say, monsoon periods, discharge increases and the sediment loads also increases. And one of the basic characteristics of rivers are that they are seldom straight for a long distance. Mostly they are curvy. You see they follow zigzag path, they meander. बड़े कम आपको रिचेस नजर आएंगे जो relatively straight है. And river don't want to stay in one place. They shift lateral, and many living examples you can see like river Ravi. अगर आप देखें कि river Ravi पहले बिल्कुल जो लाहौर फोर्ट है उसके सामने फ्लो करता था,
और अब किधर है रिवर रावी? ये रिसेंट हिस्ट्री में है। और आपने देखा होगा कि वो जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसमें एक लेक बनी हुई है, दैट वाज ए पार्ट ऑफ द ओल्ड रिवर रावी, जिसको बुड्ढा दरिया कहते हैं हमें, जो पहले बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद और किले के सामने से गुजरता था। और अब आप देखें तो रिवर किधर चला गया होगा। सो rivers always shift from one place to other. So that's why sometimes we have to stop that later movement. उनकी हमें movement रोकनी पड़ती है क्योंकि उसी उसके अंदर they may be affecting our agricultural lands. कोई हमारी important कोई property है या installation है उसको protect करने के लिए. So that's why we have to carry out the river engineering rules. And then also there are changes due to the erosion and the deposition of sediments. Bed raise भी हो जाता है, lower भी हो जाता है, and the rivers they have to keep pace with that. कि river को भी अपने उस changes के साथ फिर उसको आप कहने के उसके मुताबिक वो उन्हीं conditions के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है. If the bed is raised due to the sedimentation or the bed is lowered, so accordingly the medium to large rivers they also make changes in their flows and they keep pace with that. And then rivers have a long history. कोई भी river एक दिन में start नहीं हुआ. कोई भी आप देखें, it may have taken them maybe 50 years, 100 years, 1000 years. So they have got long history. And how does a river start? So basically the soil, it collects water, then runoff begins from excess water, starts eroding the rock and soil, it forms narrow ditch, then precipitation and erosion form valley with permanent stream. So in this way a river is developed. And it takes very long time to erode, if keeping in view the characteristics of the bed and the banks. अगर तो वो rocky bed या उसके banks में से flow कर रहा है, so erosion में इसको 100 years, 1000 years लग सकते हैं to deepen its channel, to carve its width. So that's why you see in the northern areas जहाँ से ये emanate होता है, there the width is very narrow because it is very hard क्योंकि rocky bed conditions हैं, erosion it is very slow. But once it enters the plains, the alluvial, so you see the erosion is very faster. और वहाँ पर जो width अगर आपने देखें in kilometers, in miles आपको नजर आएगी. जब ब्रिजेस आपने अक्सर देखे होंगे कि जो इंडस पर बने हुए हैं, झेलम, चनाब, हैविंग मैनी किलोमीटर्स, लेकिन अगर नॉर्दर्न एरिया में जाएं वहाँ कितने को लेंथ के आपको ब्रिजेस नजर आते हैं, वहाँ नजर आते हैं आपको किलोमीटर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर परमिट नहीं करते वो रिवर को कि वो रोड कर सके और विड्थ अपनी ज़्यादा कर सके. So parts of river system are the tributaries. So these are the feeder channels जो कि उसका discharge को और ज़्यादा बढ़ाती है. Like for our Indus River, we have left tributaries and right tributaries. So जो left tributaries है वो हमारे पास काबुल रिवर है, और राइट ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखें तो ये हमारे जो बाकी दरिया हैं, रिवर रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, ये सारे दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस. और इसके अलावा और ऊपर भी अगर आप चले जाएं, शयोक और इस तरह की ट्रिब्यूटरीज और भी हैं इंडस की. सो कुछ अपस्ट्रीम साइड पर हैं, कुछ आपको डाउनस्ट्रीम. सो जस्ट upstream of Panjnad, all tributaries they merge into river Indus and it becomes one river. तो इसीलिए ये पंजनद यानी पांचों दरिया जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं. So tributaries are mainly the feeder streams. Then watershed or the catchment area is the drainage area, जहाँ पर आपका runoff सारा generate होता है and it feeds to that river. And divides are the ridges or elevated regions
which separates the watersheds. अगर आप मरी गए हैं और स्पेशली जो जीपीओ चौक है, so that is the ridge. वहाँ से आप देखें कि कुरंग रिवर और आपके और 2-3 रिवर्स हैं जिनके वाटरशेड को डिवाइड हो जाता है, वो कुछ वो राइट साइड पर जाएगा, कुछ लेफ्ट साइड पर. सो दे आर नोन एज दी वाटर डिवाइड्स, जो कि आपके कैचमेंट या आपके वाटरशेड्स को अलग करता है, क्योंकि वो हाईएस्ट एलिवेशन होगी और वहाँ पर सेपरेशन हो जाएगी कि ये इसका कैचमेंट एरिया. सो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ए डैम डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स में, तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि ये इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दूसरे रिवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन द चैनल of the river itself is the narrow depression stream which starts from the mountainous sides or towards plain side follow करती है. Banks are the edges जो आपको किनारे नजर आते हैं, and bed is the lowest part, that is the part of stream channel below the water level. So ये इसके river system के parts हैं. Tributaries जो इसको feed कर रहे हैं main channel को, watershed जो इसका drainage area, और वाटर डिवाइड जो डिवाइड कर रहा है वाटरशेड्स को. चैनल इटसेल्फ उसके बैंक्स हैं राइट लेफ्ट, और द लोएस्ट पार्ट जो वाटर लेवल से ऊपर है बिलो है वो उसका बेड है. सो ये इलिस्ट्रेट किया हुआ वही सारी चीज़ें. एंड वन थिंग विच वाज नॉट मेंशन्ड इज द फ्लड प्लेन्स. सो रिवर चैनल तो आपको ये नज़र आ रही है. सो जब when the discharge is more than the capacity of the channel, it overspills. और जिस एरिया में स्पिल करती है that is known as the flood plains. और इसी में encroachment होती है, लोग जो है अपने घर बना लेते हैं, खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, and this results in human lives and properties. तो ये रिवर का कोई कसूर नहीं होता, ये उसका designated path है कि जब उसकी कैपेसिटी से बढ़ेगा तो it will inundate the surrounding areas, जो कि सदियों से उसने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है कि मैक्सिमम वो यहाँ तक फ्लो करता है. और दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलिनिएट द फ्लड प्लेन्स, ताकि उसके ऊपर रेगुलेशंस हो, नो ह्यूमन इंटरवेंशंस कैन बी कैरिड आउट. अब आप नाला लही को देख लें, लोगों ने अपने घर बिल्कुल साथ साथ बना लिए हैं और फिर कहते हैं कि जी नाला लही में जब पानी ज़्यादा आया तो घरों में चला गया, इतना नुकसान हुआ और इतनी ह्यूमन लाइफ्स ज़ाया हो गई. सो नाला लही तो बड़े सदियों से बह रहा है. सो बेसिकली वो तो आपका स्ट्रीम रन ऑफ कैरियर है, वो कोई वेस्ट वाटर डिस्पोजल एक उसमें आप कर रहे हैं, दूसरा आपने उसके फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच कर लिया हुआ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिवर, द फ्लड प्लेन इटसेल्फ. सो इट शुड बी डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस. इसको बिल्कुल आपको नेचुरल रखना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए. और अभी आप सवान रिवर में देखें कि वहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं, रिवर व्यू अपार्टमेंट्स, आपने बड़ी एड्स वगैरह देखी होंगी, एंड दोज आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन द फ्लड प्लेन्स. और जब रिवर सवान में फ्लड आएगा तो व्हाट विल हैपन? सो वी इग्नोर दैट, और हम समझते हैं फ्री लैंड है एंड वी शुड कंस्ट्रक्ट either apartments या कोई हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट करना, क्योंकि ये लैंड बड़ी फर्टाइल होती हैं. The sediments are spread in these areas and you don't need any artificial fertilizer. तो इसलिए वे लोग जो है ना यहाँ पर ग्रो करते हैं और मॉइस्चर भी अवेलेबल होती है. Then the variables which are involved in rivers. So many variables which we can categorize as the flow, sediment, geometry, and other. So here a list has been given. Flow, which is dependent on the cross sections, stage, that is the water level, discharge, velocity, and the turbulence. So this is one variable which is involved in river. Another important variable is the sediment, the bed material properties, जो bed किस material का है. So that is because the material that will be eroded and become part of the sediment. So it is very necessary to determine what is the bed material itself, ताकि आपको sediment का अंदाजा हो कि कौन से आ रहे हैं. Then the load, bed load,
the load, the sediments which travel along the bed, जो roll करते हैं, bounce करते हैं, so those are the bed load. A sediment discharge, the total, which includes the bed load, the bed material sediments plus the suspended load. Then the bed configuration, slope or profile, because steeper the slope, more velocity, more erosion. So इस पर भी डिपेंड करता है. So sediment अगर flatter slope होगी, almost no slope, flat areas, so less sediments. Then geometry, the width, depth, cross section shape and plan pattern. और जो other variables involved हैं वो उसकी chemistry, because water में कोई salts वगैरह अगर आ रहे हैं वो, और biota, that is the living organisms in the river, so that will also vary from river to river. So of these variables which we have discussed, so we can then divide them into some independent variables and dependent variables. So independent variables, they are in the sense that nature has imposed on those rivers. मतलब rivers ने खुद उसकी choice नहीं थी, but naturally they have been imposed on the river, and river cannot do anything about that. It has to live with that. So those variables, we call them as independent variables. But there are some variables which we can adjust, or river itself can adjust. वो हम कहते हैं dependent variables. So independent variable देखें, temperature. So जो भी river का temperature है due to the surroundings, river cannot do anything with that. It has to live with that. अगर वो किसी hot region में है तो टेम्परेचर हाई होगा, अगर किसी कोल्डर रीजन में है तो कोल्ड होगा, so वो उसको चेंज नहीं कर सकता है. So that's why we say it is independent variable. Then biota, mostly this is also independent. Whatever flora, fauna which is within the river, nature has given to that. So we cannot do anything. The river cannot do anything. Discharge, this is also entirely independent, क्योंकि depending on its catchment area, उसको जो होगा ड्रेनेज पैटर्न के मुताबिक डिस्चार्ज उसका होगा, अनलेस ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम उसको चेंज करें. देन सेडिमेंट डिस्चार्ज, सो वो भी इंटायरली कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से सेडिमेंट्स डिस्चार्ज होगा. देन बेस लेवल जो उसका था वो भी क्योंकि नेचर ने इसको दिया हुआ, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट. केमिस्ट्री, जो सॉल्ट्स अगर आ रहे हैं कहीं से, कोई रॉक्स हैं जो डिजॉल्व हो रही हैं, लाइमस्टोन है, कोई और चीज़ है, उसकी वजह से कोई उसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में आ रहे हैं. देन सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लोप, ये सारी जो है इंडिपेंडेंट है. स्लोप कैन चेंज इन द शॉर्ट टर्म बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्लोप वो अपनी चेंज कर लेता है रिवर जो है. जब डेपोजिशन हो जाती है सो वो एरोजन को बढ़ा देता है और स्लोप अपनी चेंज कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में वो कर सकता है चेंज अपनी. देन कमिंग टू अदर टाइप्स ऑफ कैचमेंट्स, एक तो नेचुरल कैचमेंट्स हम कह रहे हैं, एक है रिप्रेजेंटेटिव बेसन्स और एक्सपेरिमेंटल बेसन्स. सो बिकॉज वी कैनॉट स्टडी ए नेचुरल कैचमेंट जो कि बहुत बड़ा हो सकता है, very difficult. You need a lot of resources to study that catchment area. So we select a smaller catchment area जो कि identical हो, similar हो hydrologically to that bigger catchment which we want to study. So that is known as the representative basin, because we say it is representing that larger basin. They are identical. They are having hydrologically similar pattern. So if we study the smaller one, in terms we are studying the larger one. So its area is usually from 1 to 250 kilometers square. So this is possible to study that catchment area.
लेकिन मोस्टली लाइक रिवर इंडस, अगर इसका आप बेसन देखें, इट लाइज इन 4 कंट्रीज, सो वी कैन नॉट स्टडी। लेकिन अगर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव बेसन ले लें जो कि सिमिलर हाइड्रोलॉजिकली कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, सो दैट इफ यू स्टडी, सो दैट मीन्स कि हम लार्जर कैचमेंट को समझने में हमारी आसानी होगी। देन अनदर टाइप इज द एक्सपेरिमेंटल बेसन। So experimental basin, we select a catchment area which is assumed to be homogeneous with respect to topography, soil and vegetation. So उसमें तो सिर्फ हमने हाइड्रोलॉजिकली सिमिलर कहा था, इसके अंदर हमने देखना है कि टोपोग्राफी, सॉइल और वेजिटेशन वो भी इसकी सिमिलर हो, और ये रिप्रेजेंटेटिव बेसन से दे आर मच स्मॉलर and they may only be a few kilometers scale. So they are mainly used for research studies, rainfall runoff studies के लिए, what is the relationship between rainfall runoff. तो यहाँ पर हम जो experimental carry out कर सकते हैं. So they may be by research institutions, they may select catchment area which they see that it is homogeneously match with the topography, soil and vegetation of the larger catchment जो जिसको वो स्टडी करना चाह रहे हैं. So रिसोर्सेज आपके बचते हैं और वेरियस टाइप्स की आप स्टडी करके एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स यू डेवलप, so that can be then used for various research studies. ये बाकी इसकी डिटेल दी हुई है, हमने डिस्कस कर लिया. देन जस्ट जनरल classification, if you want to see any river, so usually we can divide it into 3 zones. कि एक हम उसका अपर जोन देख सकते हैं, एक मिडिल पार्ट और एक उसका लोअर पार्ट. सो ये टिपिकल हम रिवर की बात कर रहे हैं जनरली. सो जोन 1 that will be the part where the river emanates, where the river originates. अब रिवर आपने देखा है कहाँ से निकलते हैं, आप देखा है कि माउंटेन से. सो जोन 1 will be from the mountainous areas, zone 2 middle area जो कि हम कहते हैं प्लेन एरियाज में आ जाता है, और जोन 3 जहाँ के ये डिस्पोज ऑफ होता है अनदर बॉडी में. इट कैन बी अनदर रिवर or it can be ocean or sea. So in case of say river Indus, this is exactly the model. Okay, zone 1 कि ये आपने देखा है कि तिब्बत प्लेटो से निकल रहा है. Then it is shared by these 4 countries. और ये जोन 2 जब हमारे उसमें आता है पंजाब में, सिंध में और फिर अरेबियन सी में डिस्पोज ऑफ हो जाता है. So what are the characteristics in various 3 zones? अगर zone 1 में हम देखें sediment के बारे से, so due to the steep slopes there will be erosion. तो sediment जो है वो erode होते होंगे, और क्योंकि वो अपनी जो बेड है और साइड्स को वो erode कर रहा होता है बड़ा एक्टिवली, and that's why the erosion is taking place in the zone 1. और बेड जो है उसका वो डिग्रेडेशन फॉर्म में होगा, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू erode its bed, lower its bed, so degradation will be carrying out. चैनल अगर देखें तो आपको देखेंगे अब जो है वो स्प्लिट होके एक जगह कन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि मुख्तलिफ जगहों से निकल रही हैं स्ट्रीम्स और फिर वो एक जगह जाके कन्फ्लुएंस ज्वाइन कर लेते हैं. और स्लोप ऑफ कोर्स इट विल बी स्टीप क्योंकि माउंटेनियस एरिया, और बेड मटेरियल रिलेटिवली कोर्स होगा, कोर्सर होगा, बड़े साइज का होगा, कोबल टू ग्रेवल. तो अगर नॉर्दर्न एरिया में जब जाते हैं कुनार, स्वात, तो आपको किस तरह का वो नज़र आता है मटेरियल. आपने देखा है वो पेबल्स, राउंडेड पेबल्स, कोबल, बड़े बड़े पत्थर वो पड़े हुए होते हैं. तो जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें, रिवर्स को देखें, तो आपको ये जोन 1 बड़ा क्लियरली नजर आएगा कि emanating from mountains in various streams which are joining at one point, and
they are having coarser material as their sediment. But when it enters zone 2, now the sediment is being transported only. Whatever it was carrying from the zone 1, it is being transported to the lower parts. और बेड जो है इसका ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है कि जितनी एरोजन हो रही है उतनी उसकी सेडिमेंटेशन भी हो रही होती है। एंड द चैनल इट इज फ्लोइंग इन सिंगल चैनल में फ्लो कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया पंजनद से पहले पांचों दरिया मिल जाते हैं और फिर रिवर्स इंडस ही एक ही बंद के नीचे फ्लो कर रहा है और स्लोप उसकी रिलेटिवली माइल्ड हो जाती है और बेड मटेरियल रिलेटिवली उसका कोर्सर से मीडियम की तरफ चला जाता है। ग्रेवल और सैंड आपको नजर आएगी। देन द जोन 3 अब क्योंकि ये फ्लैटर एरिया में आता जा रहा है, इसकी स्लो फ्लैट हो रही है, सो द रिमेनिंग सेडिमेंट्स इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग। आपने देखा डेल्टा विल फॉर्म। तो डेल्टा क्या है, वो पैचेस आप देखेंगे लोड के और उसके सराउंडिंग में वो फ्लो कर रहा है। इट स्प्लिट्स इनटू चैनल्स अगेन, क्योंकि उसने सेडिमेंट अपना डिपॉजिट कर दिया होता है, इट कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली, तो वो उसके सराउंडिंग से इर्द गिर्द फ्लो करता है। दैट्स व्हाई इट स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल चैनल्स, क्योंकि वो एक तय लगती जाती है तो वायर होता जाता है, इट कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली, तो उसके इर्द गिर्द वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। एंड डेल्टा इज फॉर्म। अगर आप रन ऑफ कच्छ, डेल्टा आपने सुना होगा, जो हमारा अरेबियन सी का वेरी लॉन्ग डेल्टा। सो ऑल दी सेडिमेंट्स जो बाकी के रह गए एंड मोस्टली फाइनर सैंड सिल्ट वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और बेड जो है वो एक रीडिंग फॉर्म में वायर हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो रही है और चैनल ब्रांच आउट हो जाता है, मल्टीपल चैनल में स्प्लिट कर जाता है, फ्लो फ्लैट है, सो देन इट डिस्पोजेस ऑफ इन द ओशन। सो दिस इज ए टिपिकल रिवर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, जिनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वन थिंग जो कि इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई हुई कि विद इन द मिडल पार्ट, मिडल कोर्स के अंदर ये प्रोसेसेस रिवर मॉर्फोलॉजी और कुछ कर रहा होता है। वन इज द ब्रीडिंग प्रोसीजर और वन meandering प्रोसेस। कि आपने देखा होगा ब्रीडिंग, अगर ये गाजी बरोता से आप डाउन स्ट्रीम देखें तो आपको ब्रीडिंग पैटर्न नजर आएगा कि सैंड आपको जो बड़े पीसेस नजर आएंगे सेडिमेंट के, और जो चैनल है वो स्प्लिट होगा वाटर एंड देन इट यूनाइट्स। सो ब्रीडिंग पैटर्न वो बन जाता है। ब्रेड निकला कि जिस तरह ये लड़कियां अपनी चुटियां बनाती हैं, आपने देखा किस तरह वो जिग जैग करती हैं। सो ब्रीडिंग, इफ यू सी देयर आर चंक्स ऑफ सेडिमेंट्स, द flow takes place around those chunks, so they divide and then unite. So different patches में आपको ये sand bars type नजर आएंगे और ये बड़ा आपको distinct नजर आएगा डाउनस्ट्रीम गाजी बराज जो है। और इफ यू गो टू सिंध, आपको ये मेंडिंग पैटर्न नजर आएगा, जो कि आपको बड़े बड़े कर्वेचर्स नजर आएंगे। स्पेशली मंजोदारो अगर आप गए तो वहाँ बहुत बड़े आपको meanders नजर आएंगे। सो इन द मिडल कोर्स दीज 2 प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, एक ब्रीडिंग का और एक meandering का। और ये सिर्फ इसलिए मैंने ये फिगर अलग से दिखाई है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज द सेम, डेल्टा फॉर्मेशन एंड डिस्पोजल इनटू द सी। सो दिस इज यहाँ पर बस हम एंड करते हैं। ये मैंने फिर आगे इसको सेपरेट कर दिया, तो ये लेक्चर 2 आपका स्टार्ट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम ये से स्टार्ट करेंगे रिवर से। आज उनका फर्स्ट डे है।
So we'll stop here. Notice में क्या आ रहा है? तो एनीथिंग जो आप कोई डिस्कस करनी हो, कोई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? सो अटेंडेंस जो आप वहीं पर ही लिख लेना, मैं वहाँ से पे नोट कर लूँगा, अभी मेरे पास आई नहीं है अटेंडेंस शीट, सो आई विल नोट इट फ्रॉम देयर, वहीं पर ही आप टाइप कर दें उसमें. So in this term we are offering you 2 compulsory courses and 2 elective courses. So mandatory courses or compulsory courses everyone has to take: the river engineering and the computational hydraulics. And out of those 2 elective which have been offered to you, you can select one of them. So both will be offered at the same time on Wednesday: the hydrological climate change and hydrological cycle, and the other one is the GIS and remote sensing application in water resources. So उनमें से आपको चॉइस है कि आप इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं. So this was one announcement. और एनरोलमेंट के लिए अभी ये वीक भी ओपन है और नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि अभी डे स्कॉलर्स नहीं आ सकते, हॉस्टल वाले सिर्फ एनरोलमेंट करा सकते हैं. Next week, the day scholars can come and fill the enrollment forms. So, next week tak enrollment will remain open. Our second announcement is regarding your research phase now. As you have already completed 3 subjects, and now you are going to study the rest of the 3 जो कि इस टर्म में ऑफर हुए हैं. So, अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया सब्जेक्ट्स का related to hydrology and hydraulics. So make up your mind regarding what research you want to carry out for your thesis, and accordingly आप supervisor select कर लें. We are 4 PhD available, and first come first serve में आप available हैं supervisors. The CR, you can communicate your name to him regarding the 4 supervisors के किससे आप करना चाहते हैं रिसर्च. सो इक्वली डिवाइड होंगे. अगर आप मसलन 20 है and we are 4 research supervisors, so every research supervisor will get 5 students. So accordingly आप लिस्ट जो है CR आपकी बना देंगे और फिर नेक्स्ट वीक वो मुझे सबमिट कर दें और फिर मैं उसको जो है वो कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा. सो यू कैन कॉन्टेक्ट योर CR जो मेरे कमर न्याज हैं, और इनको अपनी चॉइस आप लिखवा दें. सो इट इज़ ओपन टू यू, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं सुपरवाइजर. जी सर. तो नंबर बस देख लेंगे इक्वल होना चाहिए. एक आधा कोई ज़्यादा हो जाता है तो वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिवाइड होते वक्त मे भी कोई और नंबर हो. तो नेक्स्ट वीक में फिर आप मुझे कम्युनिकेट कर देना ये लिस्ट. तो मोस्टली आप डे स्कॉलर्स आते हैं तो मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में ही होगा भी, क्योंकि हमारे पास जो हॉस्टल वाले हैं वो तो अफगानी स्टूडेंट थे, दे आर ऑल्सो ऑन लीव, वो भी मेरे को ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं. तो और बाकी आपके पेपर्स वगैरह भी चेक हो रहे हैं. सो मे बी दिस वीक हम आपको जो है वो पार्किंग एरिया में बुला के चेक करा सकते हैं. तो हम CR से हम कम्युनिकेट कर लेंगे, हम कोऑर्डिनेट के गेट नंबर जो है 1 नहीं 2 बल्कि 2 या 3 यहाँ पर हम मीट कर सकते हैं आउटसाइड नस्ट कैंपस, और वहाँ पर आपको पेपर शोइंग कर दीजिए.
क्योंकि रिजल्ट भी इसी वीक में फाइनल होना है, तो वो आपको पेपर पर जैसे चेक होते हैं हम कम्युनिकेट कर देंगे आपको। तो आई होप ये फेयर अरेंजमेंट है कि आप अपने देख सकेंगे, so that result can be finalized by IBS and FBS. तो और कोई क्वेरी हो आपकी तरफ से तो आप यू कैन आस्क मी। सर अगर कोई एक पेपर में फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा? किस चीज का? अगर कोई पेपर क्लियर नहीं होता तो 3 में से। चेक ना करें इनको। सर अगर पेपर क्लियर नहीं होता किसी का, अगर कोई फेल हो जाता है पेपर में तो। हाँ वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपका मिनिमम 2 CGP होना चाहिए। अगर आपका 2 से कम आ रहा है तो वी आर सॉरी कि फिर तो वो विड्रॉल केस हो जाएगा। तो ये तो अभी तीनों पेपर के बाद आपको पता लगेगा उसके रिजल्ट में कि आपका क्या बन रहा है। मिनिमम 2 आपने रखना है अपना। तो अगर एक में मतलब फेल भी हो जाते हैं, दूसरे में 2 में अच्छे हैं, तब भी आप 2 से ऊपर है तो कोई उसमें कोई वो नहीं, आप उसको दोबारा वो सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं। फेल वाले तो दोबारा ले सकते हैं, और जो उसमें आपका कम आए 20 से कम, वो आप रिपीट कर सकते हैं। यू हैव गॉट 3 चांसेस, 3 सब्जेक्ट आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म की, हाँ जी, अगर अगर कोई इस तरह का सब्जेक्ट है कि वो क्लियर नहीं हो रहा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो जो ऑफर हुआ है तो वही रहेंगे। अभी नेक्स्ट टर्म से हो सकता है, जिस तरह ये वाली टर्म है इसमें आप कोई छोड़ के तो कोई और कोई इलेक्टिव ले सकते हैं। जियोटेक का ले सकते हैं, जियोटेक में भी 2 ऑफर हुए हैं जो कि आप ले सकते हैं। इलेक्टिव कंपलसरी तो आपको हर हाल में करना ही करना है, इलेक्टिव में सिर्फ चॉइस है आपके पास। सो 2 हमने ऑफर किए हैं, 2 जियोटेक वाले ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा आप ISC IGS में भी देख सकते हैं, अगर हमारे वो अप्रूव्ड लिस्ट पर है तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी तो नाइस में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है वो इलेक्टिव आप प्रेफर करें। दूसरे आपको पढ़ने में भी मुश्किल आएंगे क्योंकि वो दूसरी डिसिप्लिन के होंगे। थैंक यू सर। सो ओके, अगर देयर इज नो क्वेश्चन तो सर क्लासेस अल्टरनेट ही चलेंगी जैसे लास्ट टाइम था, डेज और हॉस्टलाइज की? किस चीज का? सर क्लासेस जो हैं जैसे इस वीक में है डे, हॉस्टलाइज का डे है, मतलब वीक है पूरा, और नेक्स्ट वीक फिर डेज का होगा, इस तरह चलेंगी क्लासेस या फिजिकल हो जाएगा सारा? ये आपको कोई आया आइडिया? अच्छा, नेक्स्ट वीक से जो है ना वही होगा ऑल्टरनेट में, कि एक दिन हॉस्टल वाले, एक दिन जो है ना वो डे स्कॉलर्स। अभी ये वीक सिर्फ प्योरली हॉस्टल वालों के लिए, क्योंकि इससे पिछले 2 वीक्स जो है ना वो डे स्कॉलर्स के लिए थे, तो वो बैलेंस करने के लिए एक हफ्ता इनको दिया, उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा। ये सर अगर और कोई ऑनलाइन रहना चाहे जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में था वो भी हो सकता है? किसका क्या? जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में था। हाँ जी, वो ऑनलाइन हो सकता है। वही आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जी, फॉर जी। दिस मंथ मैं DL पर ही रहना चाहता हूँ, वो Yes. आप हाँ मंथली सबमिट करते जाएं, बट ओनली जो क्लासेस के लिए फॉर OST और फॉर ESC वो FTF में उसकी कोई माफी नहीं है, वो आपको आना ही जी। पड़ेगा। जी, सर। हाँ, बाकी क्लासेस तो आप पूरी टर्म में ऑनलाइन जा सकते हैं, लेकिन हर मंथ आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, वो मंथ वाइज है। जी सर, थैंक यू। और वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि ये ना कहें मुझे फिर समझ नहीं आई थी कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा था। जी सर। क्योंकि अभी हमें UG में ऐसे एक स्टूडेंट ने सवाल गलत किया हुआ था, तो पेपर चेक में जब उसको दिखाया तो हम कह रहे थे कि मैंने तो ऑनलाइन पढ़ा था। तो मैंने कहा ऑनलाइन में हम डिफरेंट पढ़ाते हैं, तो उस वक्त आपको नहीं समझ आई थी तो आप पूछते हो मैं। जी सर।
अब ये कहना है कि जी मैं तो ऑनलाइन पढ़ता रहा हूँ तो मुझे वो सही समझ नहीं आई, जी तो इसलिए हम तो मौका पूरा दे रहे हैं कि ऑल्टरनेट पर ना, लेकिन अगर कोई आपकी मजबूरी है तो आप बिल्कुल डीएल पर जा सकते हैं, कोई ऐसा जी सर, मतलब कोई भी जी सर, जिसकी भी कोई इच्छा है। तो अटेंडेंस अपनी इस पर ही लगा दें, पर मैं यहाँ से नोट कर लूँगा पूरा। तो ओके, वी क्लोज्ड आउट